নমস্কাৰ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু নতুন দিল্লীত ৰিপুন বৰা সংবাদ মেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিছো কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি এই সন্দৰ্ভত তেওঁ সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিছে ৰিপুন বৰাৰ সৈতে সংবাদ মেলত উপস্থিত আছে তৃণমূলৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱ আৰু অসমত শক্তিশালী হ'ব তৃণমূল কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ কাৰণ সোনিয়া গান্ধীক জনাইছে পত্ৰযোগে লগতে ৰিপুন বৰাই কৈছে যে তেওঁ 40 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছত আছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰা যেহেতু কিছু নিজৰ মাজতে ক্ষমতাক লৈ যুঁজ হৈছে ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজৰ মাজৰ যুঁজত আৰু সেইভাবে তেওঁ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে আৰু সেই সকলোবোৰ কথা লৈ তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো election in Assam. Your present Chief Minister Himanta Biswa had claimed that he is in touch with Paresh Barua and talks would start soon. And after he became CM, nothing has happened. Do you think it was the election gimmick? How can we answer? No, that I cannot answer right now because you see we have seen Assam Chief Minister. He is always, this is his modus operandi, always in habit of claiming talk. He always makes tall claims. That is their agenda of BJP. মই এইটো তেওঁলোকৰ কথা মই এইটো বিষয়ে একো নাজানো মই এই বিষয়ে আজি একো নকওঁ এইবিলাকতো গোপন কথা কেলে কম আপোনালোকক সময়ত আপোনালোকে গম পাই থাকিব लेकिन सर आप जो राज्यसभा इलेक्शन में आपने पहले कहा कि आपकी पार्टी जो पुरानी पार्टी थी कई ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया अब आप टीएमसी में आ गए तो अब तो नाम उजागर कर सकते हैं कौन से ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया you see no you see there must be I am a responsible politician there must be some political ethics I will never violate any political ethics रिपुन दा आप राज्यसभा में फिर से इस साल आएंगे कि अगले साल आएंगे No, this is that is not my agenda. That is not my agenda is now to build up Trinamool Congress, to make Trinamool Congress a vibrant party in Assam and to raise the voices of the people against BJP from the platform. राज्यसभा में रह के ज्यादा और अच्छे से कर पाएंगे ये पूछा That is a different thing. I am not having any plan of that now. Who are the leaders who congratulate you after quitting the Congress? There are so many leaders. You one see, important. so many leaders, so many my intellectuals from Assam, and so many right-thinking men. So many, even election strategist Prashant Kishore also congratulated me. So many. Congratulated you on joining TMC? No, that day when I joined, he made me telephone call on my WhatsApp. He offered me. He offered me best wishes. He offered me best wishes. He's answered it now. One question is that first time we see from West Bengal you get the Rajya Sabha ticket and they belong from Assam. And second thing is now Ripun is coming. We can see another one person from Rajya Sabha from West Bengal. See, I'll just want to speak about a very important point. A friend of mine asked that when did you decide this? We were all hoping that a capable parliamentarian like Ripun Bora ji should be in Rajya Sabha from the Congress because fact is Congress gave him a ticket. We cannot deny it. एक राज्य सभा का टिकट मिलना भी बहुत बड़ी बात होता है मुझे तो नहीं मिला कांग्रेस से रिपुन बोरा जी को 2 बार ही मिला सो व्हाट आई एम सेइंग इज ये मेरा पर्सपेक्टिव है ये राज्यसभा in the opposition of Rajya Sabha, especially national media should note and Northeast media should note, he was the last seat that Congress had from Northeastern states in the opposition of Rajya Sabha. Because Rani Nauroji का सीट हम नहीं ले सकते थे ये आखिरी सीट था कांग्रेस पार्टी का नॉर्थ ईस्ट में इन राज्यसभा ऑपोजिशन रिपुन बोरा जी के हार जाने के बाद पूरे राज्यसभा के ऑपोजिशन में एक ही नॉर्थ ईस्ट की एमपी रह गई है मैं बाकी सब बीजेपी में है अब आप सोचिए जिस तरह से इस सीट के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए था डिड दे फाइट फॉर दिस सीट आपके पास संख्या थी সংখ্যা গরিষ্ঠতা কিন্তু ছিল এই রাজ্যসভা সিটের জন্য একটা লাস্ট সিট দ্য লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং ফ্রম নর্থ ইস্ট হু কুড হ্যাভ ওয়ান এন্ড কাম উইথ দ্য সাফিশিয়েন্ট নাম্বারস ডিড দ্য কংগ্রেস পার্টি ফাইট দিস রাজ্যসভা সিট দ্য ওয়ে দে শুড হ্যাভ আই থিঙ্ক হি ইজ a thorough gentleman, he is not saying it.
That's reason enough for someone to think what Congress felt about that seat and about the revival. There is another seat for Ripun in Parliament, very recent, very soon. See, I will tell you something. There is a, you are repeatedly asking me about rehabilitation of Ripun Boraji. Let me tell you, there are a lot of people wanting to join Trinamool from Assam. I am not going to take the names, but I feel my leaders, I am no one to select, but I think my leaders zeroed in on Ripun Boraji. रिजल्ट कुछ भी रहा हो पास्ट में आसाम का, आप लोग आसाम को मेरे से बाकियों से शायद बेहतर जानते हैं. आई डोंट थिंक रिपुन बोरा जी पीसीसी बनने के बाद एक दिन भी घर नहीं बैठे. Whether we won or lost is destiny. So many things happened, alliances, this, that, internal fight. But he is a hard-working person. Today in Assam, let me tell my friends in the national media and Bengal media, opposition is zero in Assam. There's nothing there. And let me give the biggest example. Ripun Boraji is not saying it. I am not saying it. Chief Minister of Assam is saying AUDF asks me and gives candidate. He is on record saying it. AUDF is saying Congress voted for the BJP candidate. Congress is saying AUDF cross-voted. AUDF is saying Congress cross-voted. Hemanta is saying everyone cross-voted. So AUDF, Congress and BJP are all one in Assam. Yeah. Ripunda lost. Let me just finish. So what I am saying is, today, if we want a formidable opposition in Assam, आज एक बहुत बड़ा वोट शेयर है जो एंटी बीजेपी अभी भी है आसाम में. टू फाइट, टू आई थिंक लेट अस नॉट बी ओवर एम्बिशियस कि हम जाके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एटलीस्ट give a strong opposition to the people of Assam. That is our immediate goal. And Ripunda is very capable, and Mamata Di will decide. Mamata Di will decide that, and I believe from my experience that Mamata Di always rewards hardworking people, and I'm sure she will give him a big Prashant Kishore as a strategist is working for TMC long, and now he's meeting with Congress. Will it be a problem with you if he joins Congress? If he joins Congress? See, I just want to say one thing. I joined Trinamool Congress in last August. Whatever little I've seen, there are a number of strategists Trinamool Congress is working with. When it comes to publicity, when it comes to strategy, when it comes to election strategy, who's going to work in Bengal, who's going to work in Assam. So for me to specifically comment on one political strategist who's also working with us, I don't think it's fair comment. So I'm saying it again and reiterating that yes, he is one of the political strategies and we are working with. We have many of them. Like recently, one of our internal strategists told us that despite all the negative focus on Bengal, we did a survey. Honorable Chief Minister, West Bengal's popularity and acceptance amongst the people of Bengal is 75% plus. So we have those strategists also in our party. सुष्मिता जी, एक सवाल ये भी है, आपने कहा कि बहुत सारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या एक चीज सामने आ रही कि ममता बनर्जी जब असम का दौरा करेंगी उस दौरान ऐसे नेता शामिल हो सकते हैं, तो ममता बनर्जी का क्या प्रोग्राम है असम का दौरा कब करें? देखिए, अभी हमारा वहाँ संगठन भी नहीं तैयार हुआ, तो हवा में बातें करने का तो फायदा नहीं है. हम जो हमारा डिस्कशन हुआ अभिषेक जी से, पहले हम बैठेंगे, क्योंकि आसाम का पॉलिटिक्स आसान नहीं है. अपर आसाम का पॉलिटिक्स एक तरह का है, लोअर आसाम का पॉलिटिक्स एक तरह का है, बराक वाली का एक तरह का है, सेंट्रल आसाम का है, नॉर्थ बैंक का है. सो वी विल हैव सेवरल स्ट्रैटेजी मीटिंग्स. और जब ज्वाइनिंग की बात आती है, जब से मैंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया है, मेरा फोन मतलब इट्स लाइक माई फोन इज लाइक द हेल्पलाइन फॉर तृणमूल. इतने लोग आने चाह रहे हैं, पर हम चाहते थे कि वरिष्ठ नेता हमारे साथ हो, हमें नेतृत्व दे,
और मेरा मानना है वो नेता रिपुन बोरा जी हैं असम में। अब आप 5 सवाल पूछे जो होता बंगाली I will not say much. I am here to lend my full support to Mr. Ripun Bora. I have heard him speaking. He is one of the finest speakers I have ever heard. He has sterling qualities and it's a great development. But I would like to take 1 minute. It's already hot and we are getting neem leaves and I can also see monkeys around. Now, having said that, पुष्प वृष्टि तो वो हट गई वहाँ से जो भी. Now, one very serious thing, I was going through the figures. You may have heard my budget speech, the speech on the budget. You see, we cannot go on suppressing this bad news for too long. It is hitting us on a daily basis. Okay, we have crossed the 6% mark in retail inflation. 6% mark in retail inflation, please try to understand what it means. When your banking rate is between 5% for fixed deposits and 2.5% for others, the difference is pure robbery, pure daylight robbery. That means government will give you 2.5 and you will lose 6. This strategy is a corrosion of the economy. The economy is not being shattered, it is being corroded with acid. So one is that inflation, and this inflation is being fueled deliberately because of policymakers who don't have an idea of how to manage an economy.